Are you someone who's always conscious about what you eat and you're always counting on your calories? कि आपको लगता होगा कि आप कुछ भी खा लोगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा, हवा भी खा लोगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा, जिसके कारण आप अपनी डाइट में से कई सारे फूड्स को कट डाउन कर देते हैं. But let me tell you, that's always harmful. So instead of consuming all the fast food items or things that are not healthier, always opt for healthier options. So in this video, we will tell you about some of the most conscious food items that you can include in your daily diet, which will also help you in losing weight or if you want to maintain your health. Well, the first item is the मखाना. मखाना जिसे फॉक्स नट्स भी बोलते हैं, एक इतना अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, especially for snack time. So if you eat pakoras or you go for some other unhealthy fast food items, just say no to all of that. आपका easily इससे weight भी बैलेंस रहेगा और मखाना खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे. Well, मखाना आप easily घर पर भी बना सकते हैं. Well, if you do not have time, then you can go for the conscious foods makhana. They come in a lot of flavors. Well, another great option we have for your tea time snacking are almonds, जिसे हम बादाम भी बोलते हैं. वेल, अगर आप बादाम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे आपका वेट गेन हो सकता है. वेल, if you only consume a handful of these nuts with your tea or anytime that you're roaming in office, it makes for a super healthy snack. So instead of going for some other unhealthy options, you can go either with the makhana or a handful of these almonds. Well, weight lose करते टाइम सबसे ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जिन्हें मीठा यानी कि चीनी शुगरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और उनको वो अवॉइड करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. Well, इस चीज़ के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है. You can be conscious while eating sugar and you can opt for honey. So say no to sugar and opt for honey. You can put your honey in warm water. While you wake up, you should always consume honey with lemon and water. Then also you can replace your sugar with honey when you consume tea, or if you just want to have a sweet craving, you can just go for a teaspoon of this conscious honey. Well, chewing gum होती तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं हर टाइम chewing gum जो है वो chew करते रहते हैं, उनकी आदत सी बन जाती है. Well, मैं आपको बता दूं कि you should always be conscious about what you put in your mouth because chewing gums contain a lot of calories. So these peppermint drops are absolutely natural. They give you that minty flavor that you get from your chewing gums. So all your chewing gum cravings will be satiated with these peppermint drops. Well, लोग जनरली क्या करते हैं, खाना खाने के बाद बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए और उसके बाद अपनी डाइट को जो है जो आप बैलेंस कर रहे थे खाते टाइम उसको किल कर देते हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं. वेल, मेरे पास एक सोल्यूशन है. यू कैन बी कॉन्शियस आफ्टर योर मील्स ऑल्सो एंड यू कैन कंज्यूम आफ्टर meal digestive. Well, this contains soft, ajwain, a bit of jaggery also. So this keeps your mouth sugary and keeps you satiated with your sugar cravings, and it is also good for digestion. So from the next time, don't be conscious while snacking. You can go for the makhana or a handful of nuts. और अगर आपको chewing gum खाने का शौक है, then absolutely say no to it. Consume peppermint drops. एंड अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, चाय पीना आप नहीं रोक सकते हैं, तो आप अपनी चाय में हनी का इस्तेमाल करें और वही खाना खाने के बाद हमेशा आफ्टर डाइजेस्टिव चीज़ें जैसे सौंफ, अजवाइन, इनको कंज्यूम करें. इससे आपका पेट भी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एकदम सही रहेगा. तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ऑन फूड, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, ब्यूटी, ऑटो एंड टेक, you can simply log into our website trends9.com. Also, we have a YouTube channel, so do not forget to like, share and subscribe.